Hello everyone, today I Abhishek Verma and my partner Anjali Maida are present to give a presentation on the topic Git and GitHub. So first I would be explaining Git and then I would be handing over to Anjali to continue with GitHub. So in this presentation we would be covering the topics like what is Git, some of the common terms which we use while working with Git, basic commands of Git and the workflow and branches in Git. And after that, in GitHub, Anjali would be covering the features of GitHub, the major functions of GitHub, and how it helps developers and students. And also, there would be a demo of working with Git. So first, let's start with what is Git. So Git is a distributed version control system which was designed to track changes in the code, allowing developers to collaborate and making project management more efficient. It is a command line interface based tool and it is used to take snapshots of each and every version of the source code. The features which Git provides are, as already mentioned, it allows us to track the changes in the source code, enables collaboration between developers, and the branching and merging feature is very famous, and it is also highly secure and reliable. Some of the common terms while working with Git are first, repository. A repository is a storage space of all the project files and folders and the history. The commit the term commit means a snapshot of all the changes. So means that a commit would be storing all the changes which have been made in our source code, and the staging area is the place where all these changes will be placed before they are committed. So any changes which we make to a certain file would be first staged before they are committed. Branch. A branch is a parallel line of development and it would be covered later while we would be taking a look at Git branches. Merge is basically combining the changes from one branch into another. Clone. A clone is a copy of a remote repository made on our local system, and pull is a term which we use when we are downloading the changes from a remote repository. As Git provides the feature of collaboration, other developers might be pushing certain changes onto the remote repository, which is hosted on platforms like GitHub. And if we want to get those changes on our local device in the local repository, we would have to pull those changes. So now let's have a look at a few Git commands. And here I have taken an example and we would be working on those commands through that example. So first, the git init command. It is used to initialize an empty Git repository. And as you can see, I run here the command on the terminal and it tells me that it has initialized an empty Git repository and it gives the path where this repository has been initiated. The .git folder is a hidden folder in which all the commits are saved and the history of our source code is saved. Git status. It is a command which is used to check the status of our repository, whether we have untracked changes or modified files which are not yet staged or uncommitted files. The git log command is used to view the commit history of our source code. So as in this example, you can see I have two commits, the initial commit and the version 1, and you can see that it here the master word which is mentioned here tells me that I am currently on my master branch, and the head pointer here shows that the repository is currently in this commit. So the source code belongs to this version right now. Git branch, it is used to view all the branches of the source code, and we would be covering it with the git branches. Now, the git add file command, it is used to add the files to the staging area. And instead of the file names, if we put a simple full stop there, it would add all the modified files to the staging area, modified or untracked files. The git commit -m message. This command is used to commit the changes that have been added to the staging area, and the -m flag. It is used to tell that the commit message would be given with the command itself, and if we do not use it, it means we directly use the git commit command, then a separate editor is opened in which we can write the commit message, and when we close it, the commit is made.
git push. So this command is used to push all of the local commits to the remote repository, while the git pull command is used to fetch and merge those changes from the remote repository onto our local repository. The git merge branch command is used to merge two branches. The git reset hyphen hyphen hard. This command is used to reset the staging area and the working directory. That is, all the changes that have been made, whether tracked or untracked, it means staged or unstaged, will be lost permanently and we would be rolled back to the last commit. While the git checkout hyphen hyphen full stop, this command reverts all the unstaged changes, while the changes that have already been staged would be kept. The git checkout branch command is used to check out a different branch. It means to switch between branches, or we can also use the commit hash, which I would be covering later. So we can directly add the commit hash instead of the branch, and it would take us to that version of our source code. So here is an example, the git checkout command, and this is the commit hash. On the in the image on the right side, you can see I have made the git log. So here you see the commit, and then this is known as the commit hash. So git checkout commit hash, it would detach the header from the top and bring to this state. And after this, on the right side, when I have run the command git log hyphen hyphen all, it shows me all the commits that have been made, but also shows that the head is on this commit. It means that it is showing us the source code which was there when this commit was made. And on the top where previously master was being written, it is showing me the commit hash for the initial commit. And now let's have a look at Git branches. So say we have a new feature which has to be implemented. So instead of directly adding it onto the master branch, we prefer to do this on a separate branch. So in the example I have taken, I created a new branch called new chapter, and using the git branch command, I can see that the new chapter branch has been created. Now git checkout new chapter would switch to this branch, and on the image on the right side, you can see that I am on the new chapter branch. Now here, after doing the necessary changes, I can run the git add dot command and it would add all the changes to the staging area. Then I have made the commit git commit hyphen m and the commit message. Now, this commit has been made on the new chapter branch. It means that if I go back to the master branch and see the log of the master branch, it will not be showing this commit there. But I can merge these changes to the master branch from the new chapter branch once the feature which we were developing on the new chapter branch has been completed. So for that, we would be using the git merge new chapter command, and this would merge all the commits that have been made to the master branch. And in this visual diagram, we can see how these changes are merged back. Now let's have a look at the Git workflow. So in our working directory, we initialize the empty Git repository and make some initial files and do the changes. Then I run the git add command, which would take all the files to the staging area, and there I do the git commit, which would be the current state of my local repository. Now I want to push these changes to a remote repository, so I would be running the git push command, and all these changes would be pushed to the remote repository. Now, if as a GitHub provides the feature of collaboration, so other developers could have also pushed certain changes onto the remote repository, and now I want to pull those changes that have been made onto my local repository. So I would run the git pull command, and this would pull all those changes that have been newly added onto the remote repository and are not present on the local repository into my system from the linked remote repository. This linking of the remote repository would be covered by Anjali in her part. And
Once we are back in our local repository, we can use the git checkout to view some other branch or to go back certain versions. Now I would be handing over to Anjali for briefing us about GitHub. Thank you. So, hello friends, let's start with GitHub. So, GitHub is a cloud based platform that provides hosting for Git repositories, facilitating collaboration and code sharing. GitHub एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम हमारी गिट रिपोजिटरीज को होस्ट कर पाएं एंड अदर पीपल्स के साथ कोलैबोरेट कर पाएं एंड इवन वी कैन शेयर और कोड विद अदर पीपल्स टू. And next is the features of GitHub. First is pull request, a way to purpose and collaborate on changes in a repository. पुल रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होती है कि अगर हम ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हर एक ग्रुप मेंबर्स के पास अपनी एक लोकल रेपो होगी और वो उस पर अपना कोड लिखेगा एंड अगर उसे अपना कोड मेन ब्रांच से मर्ज करना है तो उसे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल रिक्वेस्ट. An action CI/CD automates the workflow like testing and deployment. Like GitHub हमें automate workflow प्रोवाइड करता है फॉर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट. विकी क्या है? डॉक्यूमेंटेशन स्पेस फॉर प्रोजेक्ट्स. लाइक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक इफ एनी अदर पर्सन अगर हम जानना चाहे कि हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्या करता है, सो वो डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकता है. इश्यूज, ट्रैक बग्स, टास्क और आइडियाज फॉर अ प्रोजेक्ट. लाइक हमें गिटहब इश्यूज रिजॉल्व करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बग्स को ट्रैक करता है एंड आइडिया प्रोवाइड करता है हमें प्रोजेक्ट के लिए. गिटहब पेजेस होस्ट स्टैटिक वेबसाइट्स डायरेक्टली फ्रॉम रिपोजिटरी. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में लाइक हमें अलर्ट्स प्रोवाइड करेगा, कोड स्कैन करके दे देगा एंड सीक्रेट मैनेजमेंट टू. नाउ मेजर फंक्शंस, कोलैबोरेशन, मार्केटप्लेस, इंटीग्रेशन, एजुकेशन. लाइक कोलैबोरेशन का जैसे मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में, हम डिफरेंट पीपल्स के से इंटरेक्ट कर सकते हैं गिटहब के थ्रू. लाइक देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पुल रिक्वेस्ट, फोकिंग एंड पुल रिक्वेस्ट, असाइनिंग एंड क्लोजिंग इश्यूज, ब्रांच प्रोटेक्शन एंड कोड रिव्यूज. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स एंड गिटहब जो है हमारा ओपन सोर्स है. फाइंड द रिपोजिटरी टू कंट्रीब्यूट, हम खुद रिपोजिटरीज फाइंड कर सकते हैं एंड उनके साथ अपनी इच्छा से कोलैबोरेट कर सकते हैं. एंड पार्टिसिपेट इन द हैकटोबर और सिमिलर इवेंट्स. हैकटोबर एक इवेंट होता है और उस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें कि हम गिटहब के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मार्केट प्लेस, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड एप्स टू एनहेंस द गिटहब वर्कफ्लो. like CI/CD tools like Jenkins, Travis CI, code quality tools like Code Climate or Sonar Cloud, project management tools like ZenHub, Trello, and integration में आता है कि GitHub integrates with IDs like VS Code और IntelliJ IDEA, and project management tools like Jira, Trello, DevOps tools, Dockers, Kubernetes. Benefits: streamlined workflow and automating repetitive tasks. Education, how GitHub is helpful in education. GitHub provide free GitHub Pro account and also allow to access to developer tools. GitHub Classroom for managing assignments and collaboration between educators and students. And also tutorials for both Git and GitHub are available. Now see how GitHub helps developers and students. For developers, it provides a platform to showcase their skills and works. Second, collaborate with other developers in tracking real-world projects. And for students, it provides skill development by getting to work on real-world projects and gain hands-on experience. लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको इतना कुछ पता नहीं होता है तो वो गिटहब के थ्रू लाइक जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या चल रहा है आजकल, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या है, उनको सॉल्व कर सकते हैं एंड उनके बारे में जान सकते हैं. एंड इवन दे कैन कनेक्ट विद अदर डेवलपर्स एंड मेंटर्स इन द वास्ट कम्युनिटी. हाउ गिटहब हेल्प ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस. सो गिटहब प्रोफाइल इज़ वेरी हेल्पफुल इन हायरिंग प्रोसेस. लाइक ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा जो इंटरव्यूअर होगा उसके लिए कि वो गिटहब प्रोफाइल देख ले कैंडिडेट की एंड उससे डिसाइड करे जो हमारा कैंडिडेट है उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं एंड उसने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, किस किस फील्ड का नॉलेज है. तो ये उसके स्टूडेंट के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है एंड रिक्रूटर के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी. नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद गिटहब. So this is
the profile, GitHub profile of my friend Abhishek. And now here you can see this is the GitHub repositories, the project he had made it. एंड इस तरीके से हमारी गिटहब प्रोफाइल कुछ दिखती है। एंड जो ये सेक्शन है यहाँ पर हम कितने एक्टिव हैं गिटहब पे वो दिखाई देता है। ये लीड कोड की तरह ही है, लाइक जहाँ जहाँ पे ग्रीन ग्रीन डॉट्स है तो उस दिन हमने गिटहब को विजिट किया है। एंड फ्रॉम दिस प्लस साइन वी कैन क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। जब हम इस प्लस साइन पे क्रिएट टैप करेंगे देन हमारे पास ये कुछ ऐसी विंडो खुल के आएगी एंड उसमें हम न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे एंड उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ब्लॉक खुलेगा जिसमें कि यहाँ पर हम हमारी रिपोजिटरी को कुछ भी नाम दे सकते हैं एंड यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड हियर वी कैन आइदर मेक इट पब्लिक और प्राइवेट। एंड हियर इज द ऑप्शन वेयर वी कैन टेक अ रीड मी ऑप्शन दैट लाइक वो जो फीचर्स में मैंने बताया था विकी, यहाँ पर हम उस अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को अटैच कर सकते हैं जिससे कि अदर पीपल्स अगर कोई रीड करना चाहता है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में तो वो रीड कर सकता है। एंड बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन वी कैन क्रिएट अ रिपोजिटरी। नाउ हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है तो वो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ये हमारी रिमोट रिपो है। और अब हम देखेंगे कि हम हमारी रिमोट रिपो को अपनी लोकल रिपोजिटरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट आपको अपने पीसी में एक अलग से फोल्डर क्रिएट करना है एंड उसके बाद आप या तो कमांड लाइन पे उसे ओपन कर लीजिए या फिर वीएस कोड के टर्मिनल पे ओपन कर लीजिए। एंड देन आप आ जाएंगे अपनी मेन ब्रांच पे। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो गिट होता है वो मेन ब्रांच को मास्टर ब्रांच कंसिडर करता है, बट जो हमारा गिटहब है वो मेन ब्रांच का नाम मेन ही हो ये ही समझता है। दैट्स वाई हमें ये जो मास्टर ब्रांच है इसको मेन नाम देना होगा। दैट्स वाई हम ये वाली जो कमांड है ये रन करते हैं। उसके बाद जो हमारी मास्टर ब्रांच है उसका नाम चेंज होकर मेन हो जाता है। एंड देन दिस इज द कमांड टू ऐड द लोकल रिपो टू द रिमोट रिपो। सो गिट रिमोट एड ओरिजिन, और यहाँ पे जो हमारी रिमोट रिपो है उसकी लिंक हमने यहाँ पे डाल दी है एंड जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे वो दोनों लिंक हो जाएगी। एंड अब जो हमारी लोकल रिपो में हमने जो भी कोड लिखा है हम उसको पुश करना चाहते हैं हमारी रिमोट रिपो में, तो उसके लिए हमें ये वाली कमांड रन करनी होगी गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। तो जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे सारा कोड हमारा हमारे लैपटॉप पे जो लोकल रिपो है उससे रिमोट रिपो पे भी आ जाएगा। सो जब हम गिटहब पे जाएंगे और अपनी अपनी प्रोफाइल को रिफ्रेश करेंगे देन हमारी रिपोजिटरी कुछ ऐसी दिख रही होगी। Now it's time to conclude what we have learned. So both Git and GitHub are indispensable tools for modern software development. It can be said that Git is a version control system that lets you manage and keep track of source code, while GitHub is used to manage the Git repositories. We can use Git without GitHub, but can't use GitHub without Git. So thank you so much friends for watching our presentation.